मेरा नाम आदित्य है। प्रभात पांडे। मेरा नाम अभिषेक मल्होत्रा है। Hi, I am Urshi. Hello everyone, my name is Pooja. Hi, my name is Rakesh. Hello everyone, my name is Helen. My name is Swati. Hi guys, my name is Muskan. Hi, so my name is Chandrika. Prabhat Pandey and I am from Uttarakhand, Nainital. So I have completed my B2 last year, and I went to Rcare for starting my Ausbildung nursing journey in Germany. मेरा नाम अभिषेक मल्होत्रा है। I am 39 years old and I am from New Delhi, India. आपके साथ मेरी बात हुई and we started with the visa process, and I would say it was very smooth, very transparent, and team is very helpful. Hi, my name is Rakesh. I am from Hyderabad, Telangana state. So I've been contacted Rcare Overseas. The team is very helpful, and they were like, I've been asking again and again regarding the documentation, and after working hours also, the team is very closely observed with the Zoom meeting and taking into review and making me understand. So even though the team is entertaining me to done the visa process smoothly, and now I've been successfully gotten here in the Germany. Hello everyone, my name is Pooja. I am from Lucknow, India. मुझे मेरे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया कि आप आरकेयर के पास जाओ, क्योंकि मुझे याद है उनका विद इन 2 मंथ वीज़ा भी लग गया था और एप्लीकेशन वगैरह सब सबमिट हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि आपका काम यहाँ पे स्मूथली हो जाएगा। तभी मैंने सर को रीच किया, और मेरा जो काम करवा रही थी वो हिमानी मैम थी। तो मुझे याद है मेरा करेक्शन 6 बजे आता था, तो हिमानी मैम 7, 8, 9 बजे तक, कई बार 10 बजे तक भी हिमानी मैम ने करेक्शन सबमिट किए हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सर से कनेक्ट करो। मेरा नाम आदित्य है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में जयपुर से। जब मैंने मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करी, उसके बाद में देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं बाहर पढ़ सकता हूँ, एंड जर्मनी वाज द ईजीएस्ट पाथ। सो फिर मेरे को कॉन्टैक्ट मिला अंशुल सर का, एंड देन I started my process, and it was very easy because he was constantly, we were constantly in conversation, and इन्होंने process बहुत easy कर दिया था, easily explain कर दिया था कि भाई ये steps हैं that you have to take, and you will be, at your destination finally. I got the contact of Anshu sir from one of my friends. He has priorly he has consulted him for his visa process. But he's suggested me because he actually helped him a lot, and he was getting all the visa rejections from everywhere. So that's why. सारी यूनिवर्सिटी से ही रिजेक्शन आ गया था, तो लग रहा था कि शायद अब तो नहीं हो पाएगा, बट मनी दीदी और आपने काफी फोकस किया, नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, देन फिर देखेंगे, बट फिर नेक्स्ट टाइम में हो गया। I was trying to get to know what actually Ausbildung means. Then I visited a lot of consultants, and they never actually cleared my doubt. कि what is this Ausbildung? Okay, आपने जाना है, हम भिजवा देंगे। आपने करना है, हम करवा देंगे। And the second thing is, when I was going, there was a lot of fees that the consultant charges. So actually it was not something I could afford that time. The visa process was very smooth for me actually. I'm not sure, I haven't faced any difficulty for the visa process. It was very smooth. I got my visa within 4 days, I guess. So everything went well with the visa.